Sunil Ji Bhatt joining us live more. Sunil, very tragic, another case of a non-local Hindu this time who has been targeted in Kulgam area. Vijay Kumar, a bank employee, he was sitting alone in that bank office. The terrorist comes in, takes a good recce, gives a good look at the office to see that nobody was there. He goes back, minutes later comes back with a gun, point blank, shoots at Vijay. You know, this really comes as a shock for us to see that in the last few months itself, targeted killings have happened one after the other brazenly, and it seems like they've managed to execute it so comfortably. What use of a huge police deployment and army presence in the Kashmir Valley if they're not able to control this? Yes, Nabila, there is no end to targeted killings in the Kashmir Valley. Today also, a bank employee was shot dead inside his office in South Kashmir's Kulgam district. And it seems that the local administration is not taking any lessons because time and again these targeted killings are taking place. And the update is that hundreds of Hindu government employees who are serving in the valley, in different parts of the valley, have fled from there and they have reached Jammu. And here you can see that they are staging angry protests. They have taken out a protest march and they are raising slogans against LG's administration. They are saying that the situation is not conducive for the survival of minority Hindu community members in the Kashmir Valley. You can see that there is massive sloganeering taking place. We will try and get a word from some protesters here. They are raising slogans against the administration. जी आप बताइए, आप कश्मीर घाटी में काम करते हैं? सर पिछले 15 सालों से हम कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं। कौन से जिले में? सर जिला अनंतनाग। तो अभी आप वहां से छोड़कर आ गए? छोड़ के आना सर, वहां पे मरना है क्या? किसके लिए वहां पे रुकना है? टोटली अनसेफ है वहां पे, हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, भाग के आना पड़ा हमें वहां पे। सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि आपको जिला मुख्यालय में तबादला किया सर लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है, सरकार के आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। और जिला अस्पताल में अंदर आके मार रहे हैं तो बंदा कहाँ जाए? देखो ना, अभी किलिंग हुई है बैंक के अंदर, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, बंदा कहाँ जाएगा? बंदा बोलो आप कहाँ जाएगा? जब मतलब ऑफिस में सेफ नहीं है तो कहाँ जाएगा? स्कूल की बात ही मत छोड़ो आप। जी आप बताइए, आप भी कश्मीर में ही कार्यरत थे? बिल्कुल सर। कौन से जिले में? अनंतनाग जिले में कार्यरत हूँ सर मैं। तो अभी आप वहां से छोड़-छाड़ कर आगे परिवार के साथ? सर पूरे के पूरे जितने एम्प्लॉई हैं हमारे कश्मीर प्रोविंस से, सारे के सारे जम्मू आ चुके हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और हमारी मांग एक ही है कि हमें कोई टाइम बाउंड नहीं चाहिए, हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, टाइम बाउंड पॉलिसी नहीं चाहिए, क्योंकि हम 10 साल 5 साल 2 साल हम नहीं रुक सकते, हम और अपने जितने भी साथी हैं उनको मरवा नहीं सकते वहां पे। आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के जो सरकारी कर्मचारी है वो बलि का बकरा बन रहे हैं कश्मीर में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज वहां कोई भी हिंदू माइनॉरिटी में जो भी वहां बंदा है कोई भी सेफ नहीं है। और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, किसी कम्युनिटी का प्रोटेस्ट होता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक बंदा वहां आके उनकी बात सुनता है। आज सर हमारी बात यहां सुनने के लिए एक भी सरकारी आदमी, एक भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। शेम है सर, शेम है, शेम। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहते हैं सर? वी वांट ओनली वन हमारी की ट्रांसफर पॉसिबल है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप जम्मू में चाहते हैं कि ट्रांसफर? बिल्कुल। So Nabila, you can clearly see the anger of the Hindu government employees from Jammu region who are serving in the valley. They have fled from the valley and they have reached Jammu, and here they are staging protests, massive protests, and they have taken out a protest march. Thousands of government employees are here, and you can see they are holding banners in their hands. We want justice, we want transfer to our homes. So that's what they are saying. So you can clearly see that that there is massive anger, massive outrage over the targeted killings that are taking place in the Kashmir Valley. Whether it's the Kashmiri Pandit community or the Dogra Hindu community or the Hindus from different parts of the country or even the Muslim community members who are part of the mainstream, all of them are being targeted, and the security situation in the Kashmir Valley has deteriorated. And the anger is also against the administration because the people say that the government hasn't taken any lessons, hasn't learnt any lessons from the killings that have taken place, and nothing concrete is being done to prevent more killings. Today also, a bank employee was shot dead right inside his office by the terrorists. So you can see that there is that terrorists have
been emboldened, and people are also accusing some politicians of the Kashmir Valley who are shying away from criticizing and slamming Pakistan. So clearly here there is anger among people. They want that government must seriously look into their issues and they must be transferred to Jammu region. They are saying that time and again they have made pleas, repeated pleas to the local administration that they should be transferred to safer areas. But all their pleas went to deaf ears. They are saying that action must be taken against those officials also who are showing non-serious attitude towards their problems. They are saying FIR should be lodged against such officials. We will talk to some more protesters here. आप भी कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं? जी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जम्मू ट्रांसफर चाहते हैं हम सभी। वहाँ पर हमारी मतलब टारगेट किलिंग हो रही है और हम चाहते हैं कि हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। अभी जो कश्मीर में माहौल है, आपको लगता है कि वहाँ पर रहने लायक माहौल नहीं बना है अभी कश्मीर में जो माहौल है? सर अभी की डेट में देखा जाए तो माहौल ऐसा नहीं है। हम 2007 से शुरू कर रहे हैं, तभी तक हमें ऐसा नहीं लगा, लेकिन आज जो है आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हम वहाँ रह सकते, डर के माहौल में सभी जी रहे हैं वहाँ पर। अभी आपको लग रहा है कि अभी सबसे ज्यादा हालात कश्मीर अभी सबसे ज्यादा सर बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रही है। हम किसी जगह को सेफ नहीं मान सकते। इसको जिम्मेदार मानते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन, हम किसी को बोल सकते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके अभी एक कर्मचारी को गोली मार गई, उनकी सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो सेफ नहीं है। तो वहाँ वो तहसील ऑफिस में बंदा सेफ नहीं है। हमारे स्कूल तो फिर भी फारफलंग एरिया में है। कल उपराज्यपाल का जो प्रशासन है उन्होंने कल घोषणा की कि जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के सरकारी कर्मचारी हैं उनको जिला मुख्यालयों में उनका तबादला किया जाएगा। क्या आपको लगता है आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, जिला मुख्यालय में लाके भी क्या करेंगे? जी एक जगह 4-4-5 को इकट्ठा करेंगे तो उनके लिए और सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे। जहां एक मर रहा था वहां 5 किलिंग एक साथ होने का खतरा बढ़ जाएगा। So clearly you can see that people are not satisfied with the steps that have been taken by the LG administration. They are saying that even district headquarters in the Kashmir Valley are not safe for the survival of the minuscule minority of Kashmir, that is Hindus. You know, one can only imagine the kind of frustration they're currently going through, and it's only valid. Targeting killings one after the other. Today, Vijay, a banker, non-local Hindu, was shot at point blank by those terrorists. We're going to continue tracking those details. Sunil Ji Bhatt joins us live from that region where protests are now rampant, asking for the government to move them to a much safer zone, mostly in Jammu.